Welcome to SNS Academy. I am Satyanarayana Sir. Today we are going to teach Spectrum Unit 1 Sources and Approach. Why we study history? History links present to past and it helps to know about the past, what are the administrative system, what were demerits. हिस्ट्री जानने के लिए, पास्ट को जानने के लिए सोर्स चाहिए। सोर्स कहाँ से हम लोग को उसका बारे में पता चलता है? सोर्स जिस तरह आर्काइव्स या मॉन्यूमेंट्स, ये सब सोर्स है। लिटरेरी सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, those things we know about this chapter. Sources for the history of modern India. Modern India हिस्ट्री में डिवाइड किया गया है, जैसे एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। इंडिया में मॉडर्न पीरियड कब आया, इसको याद रखने के लिए औरंगजेब का डेथ को याद रखना होगा। औरंगजेब डेथ 1707, 1707 का बाद मॉडर्न एज बोला जाता है। जिस तरह 1600 में वहां पर इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को आए 1608 और 1758 से 1858 तक उन लोगों का पिक पीरियड रहा। लाइक दैट मैनी इंफॉर्मेशन वी नो इन दिस चैप्टर। सो इट इज सोर्सेस फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। यह है स्पेक्ट्रम का फर्स्ट चैप्टर, सोर्सेस फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया का सोर्स क्या है, किस तरह से हम हिस्ट्री को जानेंगे, मॉडर्न इंडिया के बारे में जानेंगे। एन अबाउंडेंस ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल इज अवेलेबल फॉर स्टडिंग इंडिया फ्रॉम द मिड 18th century to the mid 20th century. In the history of modern India, priority needs to be given to the archives. Archives refers to a collection of historical records and documents, usually primary source documents, those documents that have been created as a necessary part of some activity, administrative, legal, social or commercial. They are unique original documents, not consciously written or created to convey information to a future generation. An important part of archives relating to modern India are the official records, the papers of government agencies at various levels. तो मॉडर्न हिस्ट्री को जानने के लिए आर्काइव्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। आर्काइव्स क्या है? आर्काइव्स जो कि कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स है। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को आए थे, तो इंडिया का जो ऑफिशियल वो लोग डॉक्यूमेंट बनाए थे, जो फाइल रखा गया था, जिस तरह अगर एक बिल्डिंग बनाना है तो पहले क्या किया जाता है, एक लैंड खरीदा जाता है। लैंड खरीदने का बाद प्लानिंग किया जाता है, किस तरह वो बिल्डिंग बनेगा। ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, उसका बाद कंस्ट्रक्शन शुरुआत होता है। उसी टाइप का आर्काइव्स
कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स रहता है, और जो सा डॉक्यूमेंट्स वही एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है, जैसे ऑफिशियली में डॉक्यूमेंट्स रहता है, किस तरह वो लोग बिजनेस करते थे, किस तरह वो लोग सोशल अटैचमेंट रहते थे, यही सब पता चलता है। दे आर यूनिक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नॉट कॉन्शियसली रिटन, और वहां से डिफरेंट डिफरेंट थीम निकलता है, डिफरेंट पीपुल डिफरेंट अप्रोच होता है, डिफरेंट पीपुल का डिफरेंट अप्रोच रहता है। द पीरियड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी provide a detailed account of trading conditions during the period 1600-1857. When the British Crown took over the administration, it also kept a large variety and volume of official records. These records help historians to trace every important development stage by stage and follow the process of decision making and the psychology of the policymakers. The records of the other Europeans, East India companies, Portuguese, Dutch, French, are also useful for constructing the history of the 17th and 18th centuries. They are primarily important for the point of view of economic history, but much can be gathered from them about the political setup as well. 1600 में इंडिया को ब्रिटिशर्स लोग आए थे, और उन लोगों का बिजनेस सेटअप किए थे। उन लोगों का साथ साथ पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच, ये सब भी आए थे, और उन लोगों का डॉक्यूमेंट से पता चलता है उन लोगों का साइकोलॉजी लेवल क्या था, माइंड सेटअप क्या था, उसका बारे में पता चलता है। हेल्प हिस्टोरियंस, वो हेल्प करता है हिस्टोरियंस टू ट्रेस एवरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट स्टेज बाय स्टेज, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था, किस तरह वो लोग डिसीजन लेते थे, और पॉलिसी मेकर का किस तरह साइकोलॉजी था, ये सब पता चलता है। There are also many contemporary and semi-contemporary works such as memoirs, biographies, and travel account, which give us interesting as well as useful glimpses into the history of the 18th and early 19th centuries. Newspapers and journals made their appearance in the later part of the 18th century, and they provide very valuable information on almost all aspects of the Indian society, especially in the 19th and 20th century. Other sources of modern India history include oral evidence, creative literature, and paintings. तो जब आदमी एक जगह से दूसरे जगह जाता है, वहाँ पर कुछ देखता है, उस जो वो ऑब्जर्व, जो स्टडी करता है, उसको लिख देता है, उससे भी बहुत कुछ पता चलता है। जब बाहर आदमी घूमने जाते हैं, वहाँ से देख कर आकर इधर बताते हैं, ओरल से भी बहुत कुछ हासिल किया जाता है, इंफॉर्मेशन हासिल किया जाता है। जैसे न्यूज़पेपर, जर्नल्स में भी हम लोग बहुत कुछ इंफॉर्मेशन पता चलता है। उसी तरह मॉडर्न इंडिया में बहुत सारे प्रिंट मीडिया, ये सब निकल गया था, जो कि इंफॉर्मेशन स्प्रेड आउट इजीली हो पा रहा था। अदर सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री इंक्लूड ओरल एविडेंस, क्रिएटिव लिटरेचर, पेंटिंग्स। पेंटिंग से भी बहुत कुछ पता चलता है, पेंटिंग से उसका साइकोलॉजी क्या है,
किस तरह इंटेंशन क्या था, इस ये सब पता चलता है. तो दिस थिंग्स वी नो अबाउट द सोर्सेस. आर्काइव्स मीन्स डॉक्यूमेंट्स मिलता है. डॉक्यूमेंट्स, लेटर, जिस तरह कम्युनिकेशन, न्यूज़पेपर्स, ट्रैवल अकाउंट, बायोग्राफीज, ये सब में हम लोग को पता चलता है वो लोग क्यों डिसीजन लिए थे, उन लोग का पर्पज क्या था, किस तरह डेवलपमेंट हुआ, ये सब पता चलता है. आर्किवल मटेरियल्स. देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. सेंट्रल गवर्नमेंट archives, state government archives, records of intermediate and subordinate authorities, and judicial records. Apart from these, there are private archives and archival source available abroad. 4 टाइप का ऑफिशियल रिकॉर्ड मिलता है, जिस तरह सेंट्रल का और स्टेट गवर्नमेंट का. जिस तरह ब्रिटेन में क्या हो रहा था, पार्लियामेंट में क्या ऑर्डर आ रहा था, यहाँ पर प्रेसिडेंसीज, जो गवर्नर थे, कलकत्ता, मुंबई, बॉम्बे और मद्रास, उसमें किस तरह चल रहा था, क्या क्या सोशल स्टेट लेवल में क्या हो रहा था, स्टेट गवर्नमेंट आर्काइव्स, और रिकॉर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट, ऑफ सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज, और जुडिशियल रिकॉर्ड्स, किस तरह डिसीजन लिया जाता था, जजमेंट, उस टाइप सुप्रीम कोर्ट भी सेटअप हो गया था, जैसे 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट सेटअप हुआ था. सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स. द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया लोकेटेड इन न्यू दिल्ली contains most of the archives of the government of India. These provide authentic and reliable source materials on varied aspects of modern Indian history. The records with the National Archives, some under various groups representing different branches of the Secretariat at different stages of its development. This happened as the work of the East India Company was distributed among various branch. वेरियस ब्रांच में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट किए थे, जैसे पब्लिक और जनरल, रेवेन्यू हुआ, पॉलिटिकल, मिलिटरी, सीक्रेट, कमर्शियल, जुडिशियल, एजुकेशन, एक्सेट्रा. एंड a separate set of records was kept for each of these branches of department or departments with the appointment of जेम्स रेनल. इसको याद रखना है, जेम्स रेनल अपॉइंटेड हुए थे क्या पोस्ट में, सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल. जेम्स रेनल अपॉइंटेड हुए थे सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल. कब? 1767 में. तो 1767 में जेम्स रेनल फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल थे. द सर्वे ऑफ इंडिया बिगेन टू साइंटिफिकली, वो सर्वे हुआ था, साइंटिफिकली मैप the unknown regions of the country and its bordering lands. The records of the survey of India as well as the journals and memoirs of the surveyors provide valuable information not only on geographical matters but also on contemporary socio-economic conditions and other important historical aspects. क्या चीज का सर्वे हुआ था? सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन क्या था उस टाइम इंडिया में. द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पब्लिक, जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड एम्पल डाटा फॉर स्टडिंग द सोशल एंड रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन एजुकेशन एंड द ग्रोथ ऑफ द एजुकेशन system during the colonial rule are mentioned in the educational records of the cultural archives.
The papers bearing on the emergence of the nationalist movements were part of the public series of the Home Department records, but in 1907 a new series of records, Home Political, was started to deal exclusively with political and communal issues. The records of Reforms Office are very useful for the analytical study of the constitutional development from 1920 to 1937. इंग्लैंड का आदमी लोग जानना चाहते थे जो इंडिया में उन लोग का कंपनी किस तरह काम कर रहा है, किस तरह बिजनेस में प्रॉफिट लिया जाएगा, किस तरह इंडियन लोग का साइकोलॉजी है, वो सब जानने के लिए वो लोग न्यूज़पेपर का सहायता लिए, न्यूज़पेपर में छापना शुरू किए। उन लोग का इंटरेस्ट रहा जो इंडियन आदमी लोग के बारे में जानने के लिए। Archives of the state government. The source material in the state archives comprise the records, the former British Indian province, the erstwhile princely states, and which were incorporated in the Indian Union after 1947, and the foreign administrations other than those of the British. Apart from this, the records of those Indian powers which were taken over by the British, for instance, the archives of the Kingdom of Lahore, popularly known as Khalsa Darbar records from 1800 to 1849, are important source material. जो स्टेट आर्काइव्स बोला जाता है उसमें यहाँ पर आकर कुछ ब्रिटिश प्रोविंस था, कुछ इंडिपेंडेंट था, the erstwhile princely states which were कुछ princely states था, और foreign administrations other than those of the British, और ब्रिटिशरों के साथ साथ फ्रेंच पोर्टुगीज लोग भी यहाँ पर बिजनेस कर रहे थे. Another important collection of the pre-British public archives in India is the Peshwa Daftar housed in the alienation office. Pune, it forms the most valuable single source of the study of Maratha. यहाँ पर study of Maratha history for a period of almost a century before the fall of the Peshwas. यहाँ पर याद रखना है जो कि खालसा दरबार रिकॉर्ड कब हुआ था और इसमें क्या चीज़ का वर्णन किया गया है, और पेशवा दफ्तर इसमें फॉर स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कौन सा प्रिंसली स्टेट्स था. द आर्काइव्स ऑफ दीज स्टेट्स नाउ हाउस्ड इन द राजस्थान स्टेट्स. आर्काइव्स at Bikaner are valuable. Similar, the history of Dogra rule from 1846 in Jammu and Kashmir, and Dogra rule, these things keep in mind. In the valuable collection of state papers housed at Jammu, the other significant archives of the princely states are those of Gwalior, Indore, Bhopal, Rewa, all in Madhya Pradesh. Travancore and Cochin in Kerala, Mysore in Karnataka, and Kolhapur in Maharashtra. और archives of three presidencies जो कि विलियम फोर्ट ऑफ विलियम जहाँ पर वेस्ट बंगाल कलकत्ता में है, were lost during the sack of Calcutta in 1756, but the archives of the Bengal presidency after the British victory at Plassey battle कब हुआ था, have survived more or less in complete series, which are
partly available in the National Archives of India and partly in the State Archives of West Bengal. The records of the Madras Presidency began from 1670 and include records of the Governor and Council of Fort St. George. In these records, there is plenty of information bearing on the rise of the English East India Company as a political power in the south and the Deccan, including the Anglo-French struggle and the English conflict with other Indian powers. The archives of Bombay Presidency housed in the Maharashtra Secretariat Record Office, Mumbai are extremely useful in studying the history of Western India, Maharashtra, Gujarat, Sindh, and Kannada speaking district of the erstwhile Bombay Presidency, which were incorporated in Mysore in 1956. तो यहाँ पर कलकत्ता, मुंबई और मद्रास का प्रेसिडेंसी में जो डॉक्यूमेंट मिलता है उससे पता चल जाता है जो वो लोग किस तरह शासन करते थे, किस तरह वो लोग ट्रेडिंग करते थे. आर्काइव्स ऑफ अदर यूरोपियन पावर्स. द आर्काइव्स रिलेटेड टू पोर्टुगीज जो कि कहाँ पर रहते थे वो लोग गोवा. इसको याद रखना है. पोर्टुगीज प्रिजर्व्ड इन गोवा मेनली बिलोंगिंग टू द पीरियड 1700 to 1900 आर वैल्यूएबल फॉर द हिस्ट्री ऑफ पोर्टुगीज पोजीशंस इन इंडिया. इसमें पोर्टुगीज लोग का जो कैप्चर किए थे उसका बारे में पता चल जाता है. द ऑर्डर एंड डिस्पैच फ्रॉम लिस्बन रिसीव्ड इन गोवा and the responses and report dispatched from India to Portugal constitute the most significant historical material among the Portuguese archives. The Dutch records of Cochin. Dutch वो लोग कहाँ पर सेटअप हुए थे? कोचिन. And Malabar are the Madras Record Office and those of Chinsura in the State of Archives of West Bengal. The French archives of Chandarnagar, Nagore and Pondicherry, जो कि अभी पौडुचेरी हुआ है, were taken to Paris by the French authorities before they relinquished these settlements. The archives of the Danish possessions were also transferred to Copenhagen when the Danes sold Tranquebar and Serampore to the English East India Company in 1845. The remaining Danish records, mainly relating to Tranquebar, are now housed in the Madras Record Office. इसमें पोर्टुगीज, फ्रेंच, डेनिश ये सब का पता लगता है. जुडिशियल रिकॉर्ड्स housed in the Madras Record Office. The archives of the Mayor's Court at Fort St. George beginning from 1689 are the earliest available judicial archives. Pre-Plassey records of the Mayor's Court at Fort Williams have been lost, but those for the years 1757 to 73 are kept in record. Room of the Calcutta High Court along with the archives of the Supreme Court of Bengal जो कि 1774 से 1861 तक कंटिन्यू किया गया था, उससे रिकॉर्ड से बहुत कुछ जजमेंट के बारे में पता चलता है. Similarly, the records of the Mayor's Court at Bombay established कब हुआ था? 1728 are available in the Maharashtra Secretariat Record Office. महाराष्ट्रीय सेक्रेटेरिएट रिकॉर्ड ऑफिस में वो सब जजमेंट मिलता है. which also has the custody of the archives of the Bombay Recorders Court and the Supreme Court. Apart from containing the proceedings are minutes. The category of the records contain copies of wills जो कि probates and letters of administration which are useful for genealogical studies and for investigation.
pertaining to the state, society and economic condition in the respective regions. उस time economical condition, social condition किस तरह था वो पता चलता है. Published archives. The most significant archival publications are the parliamentary papers, which include may accept from the records of the East India Company and the Government of India under the Crown, the reports of the parliamentary select committees, various royal commissions constituted on specific subjects like education, civil reform, and famines, and the parliamentary debates on the Indian Empire are indispensable. The proceedings of the Indian and provincial legislatures, the weekly gazettes published by the central and the provincial government, and collection of laws and regulations issued from time to time also serve as useful source material for historical research. फर्स्ट न्यूज़पेपर जैसे बंगाल गैजेट, दो टाइप का न्यूज़पेपर था, जैसे ब्रिटिशर का न्यूज़पेपर और इंडियन का न्यूज़पेपर. इंडियन न्यूज़पेपर के थ्रू से नेशनलिज्म का स्प्रेड अप हुआ, प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज, ये सब पता चला. प्राइवेट आर्काइव्स comprise papers and documents of individuals and families of note who played a significant role in the development of modern India. The papers of eminent leaders of the nationalist movement and the records of organizations like the Indian National Congress are housed in the Nehru Memorial Museum and Library in New Delhi. The archives of banks, business houses, and chambers of commerce are extremely helpful in the study of economic change. जिस तरह उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, वो जो न्यूज़पेपर उससे पता चलता था जो सोशल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, ड्रॉबैक्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, ये सब थ्रू से पता चलता था. फॉरेन रिपोजिटरीज, a vast body of historical material related to the history of modern India is available in the repositories of erstwhile imperialist powers who ruled in different parts of the Indian subcontinent, as well as in some other countries. In England, the India Office records, London, and the records kept in the British Museum are very valuable. The India Office records possesses various important documents, the minutes of the courts of directors and the general court of the East India Company and various committees constituted from time to time, the minutes and correspondence of the Board of Control or Board of Commissioners for the Affairs of India, and the records of the Secretary of State and the India Council. The British Museum possesses collection of papers of British viceroys, secretaries of states, and other high-ranked civil and military officials who were posted in India. The archives of the missionary societies, for instance of the Church Missionary Society of London, provide insight into the educational and social development in pre-independent India. जिस तरह ब्रिटिश लोग इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह सेंट्रलाइज किए थे, किस तरह वो लोग कंट्रोल कर रहे थे, जिसे वाइसराय हुआ और सेक्रेटरी हुआ, उस रिकॉर्ड से पता चलता है जो किस टाइप का सिचुएशन था इंडिया का. द आर्काइव्स नेशनल Paris and the archives of the French ministers of foreign affairs, colonies and war have records that throw light on the history of French possessions as well as social political conditions. The records of the Dutch East India Company is available in
uh, Rizkasirf. The Hague and the of the Danish and Portuguese are capped in Copenhagen and Lisbon respectively. उन लोग का डॉक्यूमेंट जो कि मिलता है उससे पता चल जाता है जो किस तरह वो लोग बिजनेस चलाते थे. Apart from archives of the European nations, the archives preserved in Pakistan are of utmost importance. The West Pakistan Record Office, Lahore Record Office, Peshawar records available in Sindh, etc., gave information about the regional history of the Indian subcontinent besides shedding light on India's relation with Afghanistan, Iran and other neighboring countries in the colonial area. जो इंडिया का बाहर में जो डॉक्यूमेंट्स मिलता है उसमें पता चलता है जो इंडिया का इम्प्रेशन बाहर कंट्री में क्या था और इंडिया का को लेकर उन लोगों का थॉट प्रोसेस क्या रहा ये सब पता चलता है. बायोग्राफीज, memoirs and travel accounts. Many travelers, traders, missionaries, and civil servants who came to India have left accounts of their experience and their impressions of various parts of India. An important group among these writers was that of the missionaries who wrote to encourage their respective societies to send more missionaries to India for the purpose of evangelizing its inhabitants. In the January, Bishop Haver's Journal and Ab Dubes Hindu Manners and Customs provide useful information on the socio-economic life of India during the period of decline of the Indian powers and the rise of the British. यहाँ पर जो ट्रैवलर आए थे, जो ट्रेडर्स आए थे, मिशनरीज थे, वो लोग इंडिया के लिए उन लोगों का कंट्रीब्यूशन था जो कि इंडिया किस तरह इंडिपेंडेंट होगा वो लोग भी सोच रहे थे. तो उन लोगों का माइंडसेट क्या था और किस तरह वो लोग लीडिंग कर रहे थे वो सब डॉक्यूमेंट से पता चलता है. सम ऑफ द फेमस ब्रिटिश ट्रैवलर्स हु रॉट ट्रैवल अकाउंट्स वेयर जॉर्ज फॉर्स्टर, Benjamin Han, James Bornes' narrative of a visit to the court of Sindh, Alexander Bornes' travel into Bukhara, C.J.C. Davidson, Diary of the Travels and Adventures in Upper India, and John Butler, Travels and Adventures in the province of Assam. These things you have to remember. Famous non-British travelers who wrote about India include Victor Jacquemont, Letters from India, describing a journey in the British domains of India, Tibet, Lahore and Kashmir during the year 1828, 1829, 1830, 1831. बैरन चार्ल्स ट्रैवल्स इन कश्मीर एंड इन द पंजाब. यही लिस्ट आउट कर दिया है, इसको लिख कर रखना है. एंड विलियम मोक्रॉफर्ट. दीज ट्रैवल अकाउंट्स आर इंडिस्पेंसेबल and generally reliable source for constructing the history of modern India, especially as they supplement the official papers. Newspapers and journals. Newspaper का भी इम्पोर्टेंस रहा. न्यूज़पेपर के थ्रू से आदमी लोग को यूनाइटेड किया गया और डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम्स को एक्सपोज किया गया. फ्रॉम an important and authentic source of information for the construction of the history of modern India. The first attempts to publish newspaper in India were made by the disgruntled employees of the English East India Company who sought to expose the malpractices of private trade. For instance, in 1776, William Bolts, being censured by the Court of Directors for private trading,
resigned from the company and announced his intention to publish a newspaper. The official response to Bolt's scheme was strong and his plan ended before materializing in 1780, जो कि James Augustus Hickey published the first newspaper in India entitled the Bengal Gazette or Calcutta General Advertiser. Hickey's press was seized within 2 years owing to his outspoken criticism of government officials. Afterwards, many publications appeared such as the Calcutta Gazette, the Madras Couriers, जो कि 1788, and the Bombay Herald, the newspaper and journals of the early period, primarily aimed at catering to the intellectual entertainment of the European and Anglo-Indians. तो उस समय कौन कौन सा न्यूज़पेपर लीडिंग ले रहा था उसका याद रखना है. From the second half of the 19th century, many powerful newspapers appeared, edited, published by the distinguished and fearless journalist. Interestingly, nearly one-third of the founding father of the Indian National Congress, जो कि 1885, the Hindu and Swadesh Mitran under the editorship of G. Subramanya Iyer, Kesari and Maratha under Bal Gangadhar Tilak, Bengali under Surendranath Banerjee, Amrit Bazar Patrika under Sisir Kumar Ghosh and Motilal Ghosh, Sudhark under Gopal Ganesh Agarkar, Indian Mirror under NN Sen, Voice of India under Dadabhai Naroji, and Hindustan and Advocate under G.P. Burma, the Tribune and Akhbar-e-Am in Punjab, Indu Prakash, Danyan Bangani Bhasi and Sardharni in Bengal were other noted newspapers of the time. Indian nationalists and revoluntaries living abroad published newspaper and journals. Indian sociologist London Sami Krishna Verma, Bande Mataram, Paris Madame Cam, Talwar, Berlin, Birendranath Chattopadhyay and Gadar, San Francisco Lala Hridayal, to infuse a feeling of nationalism among Indian living abroad. वो लोग nationalism को spread up किए, and newspapers depict almost all aspects of life in colonial India from around the 1870 onwards. From the 1920s onwards, newspapers tracked the major events during the freedom struggle. However, newspaper accounts cannot be seen as unprejudiced or completely objective. The accounts that were published in a newspaper in London by the pro-British Raj, people were bound to be different from the report of the Indian nationalist paper. उस समय बहुत सारे न्यूज़पेपर निकला और न्यूज़पेपर की योगदान रहा. न्यूज़पेपर के थ्रू से पीपुल यूनाइटेड हुए. पीपुल यूनाइटेड होकर मैसिव एक्शन लेने में इजी हो गया. और ओरल एविडेंस, ओरल हिस्ट्री रेफर्स टू द construction of history with the help of non-written source. For instance, personal reminiscence, oral source allow historians to broaden the boundaries of their discipline and corroborate their finding from other source of history. However, many historians remain skeptical of the veracity of oral history. जो कि उस समय ट्रांसपोर्टेशन का इजी होते हुए और न्यूज़पेपर निकलते हुए आदमी लोग का मिलने का
आसानी हो गया और मिलकर वो लोग डिस्कशन, फंक्शन, सेमिनार, ये सब थ्रू से उन लोग का आइडिया शेयर किए. That things help Indians to understand their problems, understand the misutilize of Britishers, misutilize power of Britishers. Then creative literature, literature का भी योगदान रहा. जिस तरह the most significant outcome of the Indo-European contact was the literary genre of the novel which emerged in the latter half of the 19th century. The first important writer of that period was the Bengali novelist Bankim Chandra Chatterjee, जो कि 1838 से 94. His novels are mostly historical. The best known among them is Anand Matha. Anand Mat, noted for its powerful lyric Vande Mataram and depiction of the Sannyasi revolt. His last novel, uh, Rajsimha, can be called the grand finale to his remarkable career. Icharam Suryam Desai was fine scholar of medieval Gujarati literary history. His first novel जो कि था Hind and Britannia was one of the earliest Indian novel with political overtones. Tamil writers like Girija Devi and Ramtirtha Mal, who wrote Mohana Rajani and Daskelin Mosavalai, respectively, also made the novel an effective vehicle of social experience. G.V. Krishna Rao, Killa Bomol, the Puppets 1956 in Telugu was concerned with the moral aspects and behavior of the rural people, जो कि Bhaikam Muhammad Basir 1910 was one of the eminent writers of Malayalam, whose famous novel Balya Kalasakhi, The Childhood Friends, जो कि 1944 was a tragic tale of love. Similarly, Takji Sivasankara Pillai became prominent for his two extremely well-written works of Malayalam, जो कि Tattooed Makhan, Son of Scavenger, and Chamune Shrimps 1956. Despite having different educational backgrounds and social outlooks, all these writers shared a strong sense of realism and deep interest in the life of the marginalized and oppressed sections. यहाँ पर list of the books, those things you have to keep in mind. और पेंटिंग कौन कौन सा था, जो the company paintings also referred as Patna Kalam emerged under the patronage of the East India Company. The pictures of the people and scenes as they existed of that time, trades, festivals, dances, ये सब में पता चलता है. In the 19th century, until the introduction of photography in India, the pictorial image produced by the British and Indians, paintings, pencil drawings, etching, posters, cartoons, and bazaar prints are especially important records of the Great Revolt of 1857. The British pictures offer images that were meant to provoke a range of different emotions and reactions. पेंटिंग से इमोशन रिएक्शन का पता चलता था. The English and repressed the rebels, relief of Lucknow
painted by Thomas Jones Barker in 1859 is one such example. Another painting of this period, In Memoriam by Jospel Noel Paton, recorded in painting 2 years of the revolt of 1857. One can see English women and children huddled in a circle, looking helpless and innocent, seemingly waiting for inevitable dishonor, violence, and death. These paintings of the mutiny period are important for the historians of to interpret and understand the worldviews of the British and the Indian regarding these major events. Kalighat painting that came to the fore in Calcutta in the 19th century depicted not only mythological figure, जो कालीघाट पेंटिंग से बहुत बारे में पता चलता है, जो कि खाली mythological वो नहीं था. The latter pictures captured the social change taking place in the Calcutta of this time. These paintings made a comment on the social evils. In the last decade of the 19th century, a new art movement emerged, which received its primary stimulus. Bose and Raja Ravi Verma were representatives of this new trend. In the rise of Bengal school, led by Abindranath Tagore, nephew of Rabindranath Tagore, E.B. Havel, who joined the art school in Calcutta as principal, and Anand Kentish Kumaraswamy, son of an important Tamil political leader, played a vital role, though many of the paintings of new trend primarily focused on themes of Indian mythology and cultural heritage. ये सब important source of studying modern India का है. These things, like, share and comment this video. Thank you. Bye.